इंडियन इको में क्या सेगमेंट कर रहे हैं हम? करंट challenges challenges being faced by the Indian economy. तो उसमें हमने पढ़ा पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, और अब हम करेंगे एम्प्लॉयमेंट. वन ऑफ द की issues which the government has to address is to create employment. अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. पॉवर्टी में भी हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, तो काफी कुछ इंटर रिलेटेड होता है. पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और एम्प्लॉयमेंट इंटर रिलेटेड होगा. तो ये सारे एक ही यूनिट के पार्ट्स हैं, वो तो डिवाइड किए हुए हैं छोटे छोटे चैप्टर्स में. एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का नाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज. तो कुछ टर्म्स सीखेंगे हम इसमें कि फॉर्मल लेबर क्या होती है, इनफॉर्मल लेबर क्या होती है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है, डिफरेंट सेक्टर्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्या पैटर्न है, मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स में क्या पैटर्न है, और इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे. जनरल इंट्रोडक्शन. Work plays an important role in our lives as individuals and as members of the society. Every rational man aims to get engaged in certain work to earn a living. Every rational man. Some work on farms, some in factories, some banks, shops, and few others work at home. आज की डेट में तो मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग एट होम, बट वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क एट होम इज समथिंग एल्स. वर्क एट होम मतलब आप अपने एंड पे अपने घर से ही कुछ काम कर रहे हो. वर्क एट होम इंक्लूड्स not only traditional work like weaving, lace making, or variety of handicrafts, but also modern jobs like programming work in the IT industry. अभी एक्सेप्शनल सिनेरियो चल रहा है. आई एम टीचिंग फ्रॉम होम, मेनी टीचर्स आर टीचिंग फ्रॉम होम, मेनी बैंकर्स आर वर्किंग फ्रॉम होम, मेनी डॉक्टर्स आर वर्किंग फ्रॉम होम. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी कंसल्टेशन चल रही है. दैट इज एन एक्सेप्शनल केस. बट वर्क एट होम मतलब इनका पहले से ही वर्क एट होम, की घर पे ही काम हो रहा था. तो यस, प्रोग्रामिंग वर्क कैन बी डन फ्रॉम होम. कंप्यूटर चाहिए, डिवाइसेस चाहिए. अर्लियर फैक्ट्री वर्क meant working in factories located in cities, whereas now technology has enabled people to produce those factory based goods at home in villages. कह रहे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है. वर्क का जो डेफिनेशन है और क्या क्या उसके अंदर आता है, टाइप्स ऑफ वर्क, वो कह रहे हैं इतना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है ना, कि पहले होता था कि नहीं, अगर आप फैक्ट्री में काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो फैक्ट्री में ही जाते होगे. कह रहे अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, मशीन्स इजीली अवेलेबल है, तो लोगों ने घर पे भी प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया है. जनरल इंट्रोडक्शन. Important points about work. People work for earning a living. Purpose क्या होता है? To earn a living. Employment is an activity from which a person earns means of livelihood. Some people get money by inheriting it. However, it does not completely satisfy anybody. Being employed in work gives us a sense of self-worth and enables us to relate ourselves meaningfully with others. Every working person contributes to national income by engaging in various economic activities. We work not only for ourselves but also for those who depend on us, like our family. It gives us a sense of accomplishment when we work to meet their requirements. कह रहे सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए हम काम करते हैं. The study of working people gives us insights into the quality
and nature of employment in our country, and it helps in understanding and planning our human resources. It also helps in analyzing the contribution made by different industries and sectors towards national income. नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर से कितना आया, सेकेंडरी से कितना आया, टर्शरी से कितना आया, पता चल सकता है. तो उससे पता चलेगा किस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. It also helps us to address many social issues such as exploitation of marginalized sections of the society, child labor, etc. Contribution to GDP अगर आप मॉनिटर कर पाएंगे, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है ये मॉनिटर कर पाएंगे, चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रही, और जो लेबर है और कुछ भी सेक्शन ऑफ द वर्कर्स है एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे, मतलब उनको रीजनेबल वेज रेट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये सब मॉनिटर किया जा सकता है डेटा से. जस्ट रीड वंस मीनिंग ऑफ वर्क, व्हाई डू वी वर्क, जस्ट रीड वंस. अब टेक्निकल पार्ट शुरू होगा इस चैप्टर का. मीनिंग ऑफ वर्कर. बेटा टर्म्स इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन हमें एग्जैक्टली पता होनी चाहिए. अ वर्कर is an individual who is involved in some economic activity to earn a living. Economic activity, तो वर्कर के डेफिनेशन में आएगा जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है टू अर्न अ लिविंग. अगर आप कोई पार्ट टाइम नहीं, पास टाइम मतलब अपना आपका हॉबी है उसके लिए कर रहे हो आप, तो आप वर्कर के डेफिनेशन में नहीं आओगे. A worker is an individual who is involved in some economic activity. Economic activity must be there to earn a living. A worker contributes to the process of gross domestic product by rendering his productive activities. कुछ परफॉर्म कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है. Some examples of workers are farmers, managers, laborers, डॉक्टर्स, बार्बर्स, प्रोफेसर्स एटसेट्रा. ये सब वर्कर्स के डेफिनेशन में आते हैं. तो वर्कर की डेफिनेशन एग्जैक्ट सिंगल लाइन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. जनरल टर्म्स जीडीपी, हम पूरा नेशनल इनकम पढ़ चुके हैं, ये हमें जीडीपी जीएनपी बताएंगे. व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country in a year within the domestic territory. GDP. Gross domestic product क्या होता है? Gross national product क्या होता है? GDP में अगर हम NFIA ऐड कर दें तो आ जाएगा Gross national product. Those activities which contribute to the gross national product are termed as economic activities. Activities which can be measured in terms of money and they are considered while measuring national income. National income में जो included है वो सारी economic activities होती हैं. तो definition of worker, meaning of GDP, GNP, who all are included in workers. It is generally believed that people who are paid by the employer are workers. However, this is not true. It also, correct? Employees और workers तो अलग terms होते हैं. आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, you are a worker, but employee also. तो अगर मैं employee की definition पढ़ रहा हूँ तो employee तो वो है जो किसी employer के अंडर काम कर रहे हैं and they are being paid by the employer. करेक्ट? worker इतना रिस्ट्रिक्टेड सेंस में नहीं अंडरस्टैंड करना. वर्कर हैज अ ब्रॉडर मीनिंग. वर्कर इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस. मैं अगर अपना कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, आई एम नॉट एन एम्प्लॉई बट आई एम अ वर्कर. वर्कर इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस लाइक शॉपकीपर्स, बार्बर्स, कॉबलर्स, doctors running their own clinic, teachers running their own coaching centers, they are included in workers. Architects doing their own business. It also includes
those people who remain temporarily absent from work due to illness, injury, or other physical disability, bad weather, festivals, social or religious functions, or some other reasons. कह रहे वर्कर के डेफिनेशन में वो भी आते हैं जो टेम्पररीली एब्सेंट है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, छुट्टी मारेंगे तो वर्कर के डेफिनेशन से हटा थोड़ी ना देंगे उनको, वर्कर में वो भी इंक्लूड होते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स people who help the main workers, assistants. It means all those who are engaged in economic activities in whatever capacity are workers. अगर मेरे सेंटर पे कोई वर्कर आ रहा है, उसका काम सिर्फ क्लीनलीनेस का है, सुबह आता है चला जाता है सफाई करके, वो भी वर्कर है. सब वर्कर की डेफिनेशन. यहाँ कोचिंग सेंटर में तो भैया मेन काम तो पढ़ाई का है. अरे मेन काम से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी काम हो रहा है which can be termed as an economic activity, तो जो वो परफॉर्म कर रहा है they are considered as workers. वर्कर्स की इंक्लूसिव कैटेगरीज, मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. So the term workers includes all those people who are engaged in work, whether for others, paid workers, or for themselves, self-employed workers. So I come in the category of a self-employed worker. So definition of worker is important. So ये inclusion कि worker में क्या क्या आता है. A worker is an individual who is involved in some kind of economic activity to earn a living. Definition: it includes क्या? It includes all those people who are engaged in work, whether for others or for themselves. The meaning of workers. Nature of employment in India is multifaceted, multi-characteristic. Some get employment throughout the year, while others get employed for only a few months in a year, like seasonal workers. इंडिया में बहुत सारे different types of workers हैं. Some are permanent, they get work throughout the year, and some are seasonal workers. Many workers do not get fair wages for their work. While estimating the number of workers, all those who are engaged in economic activities are included as employed. Part time हो या full time हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. If you are engaged in any kind of economic activity, you will be considered as employed. Worker, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो employed हो. पर्पस क्या है? मुझे ये चेक करना है कि कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड है. तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वर्कर की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, उसमें से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ताकि गवर्नमेंट डिसाइड कर सके कि किस सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस एरिया में गवर्नमेंट को ज्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ेगी. नंबर ऑफ वर्कर्स. अब टर्म थोड़ी सी टेक्निकल होती जाएंगी. How do you calculate the number of workers? During 2011-12, the number of workers in India was 473 million persons. कब? 2011-12 का डेटा है. Since majority of our people reside in rural areas, the proportion of workforce residing there is higher. Majority population ही वहीं पे है, तो ज्यादा लोग भी वहां पे होंगे जो employed workers की कैटेगरी में आएंगे. Since majority of our people reside in rural areas, the proportion of workforce residing there is higher. So out of 473 million workers, nearly 3/4 are from rural areas. So they are rural workers. Around 70% of total workers are male workers. 70% male workers. 30% female. Rural women participate in larger number in productive activities as compared to urban women. Very, very important.
कह रहे जितने भी टोटल वर्कर्स थे 11-12 का डेटा 473 मिलियन वर्कर्स थे, उसमें से मेजॉरिटी रूरल वर्कर्स थे। कह रहे मेजॉरिटी पॉपुलेशन ही वहीं पे 3/4 ऑफ द टोटल वर्कफोर्स रूरल वर्कर्स थे। एक डेटा दिया उन्होंने, टोटल जितना भी वर्कफोर्स था उसमें से 70% मेल वर्कर्स थे। एक डेटा दिया उन्होंने, कह रहे जो रूरल विमेन है, जो अगर फीमेल वर्कर्स में रूरल एरियाज में विमेन पार्टिसिपेशन अर्बन एरियाज से ज्यादा थी। मतलब रूरल एरियाज में फीमेल्स ज्यादा काम कर रही हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स इन अर्बन एरियाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूरल विमेन, इसमें क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। रूरल विमेन पार्टिसिपेट in larger number in productive activities as compared to urban women. Among the rural workers, the share of female workers is more than one third. More than one third. Among the rural workers, the share of female workers is more than one third, whereas share is around 1/5 in case of urban workers. रूरल एरियाज में 2/3 मेल है, 1/3 फीमेल है। ये जो 70% है, ये तो ओवरऑल डेटा है कि ओवरऑल 70% मेल 30% फीमेल। रूरल एरियाज में 2/3 मेल 1/3 फीमेल। अर्बन एरियाज में 1/5 फीमेल 4/5 मेल। In rural areas, many women carry out works like cooking, fetching water, fuel wood, and participate in farm labor. They are either not paid wages in cash or are paid in the form of grains. सबको पैसे नहीं दिए जाते, फार्म पे काम कर रहे हैं तो आपको बोले कि आपको हम थोड़ा सा प्रोड्यूस का कुछ पोर्शन दे देंगे। For this reason, this is the reason that women are not categorized as workers. However, it is often argued that these women should also be called workers. Some scholars believe that they should not be categorized as workers because they are not being paid for most of their activities. फैमिली में ही अपनी फैमिली में काम कर रहे हैं तो उनको पैसे नहीं मिल रहे, और अगर कहीं कहीं पे काम तो मिल भी रहे हैं तो पैसों की जगह उनको कुछ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस मिल जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट एक्चुअली हाउ मच दे आर अर्निंग। दैट इज वन पॉइंट ऑफ व्यू। Others believe that we can always calculate the monetary value of the services rendered by them. So, estimated value, imputed value. It is often argued that these women should also be categorized as workers. Important है, रूरल एरियाज में विमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा है, और कि रूरल एरियाज में जो वो काम कर रहे हैं वो रेगुलेटेड सेक्टर तो नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे, बट स्टिल दे शुड बी कैटेगराइज्ड एज वर्कर। रीड करेंगे एक बारी मीनिंग ऑफ वर्कर जितना भी अभी हमने करा है और नंबर ऑफ वर्कर्स। इसके बाद आगे हम क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट ना कि वर्कर्स क्या होते हैं, लेबर फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, वर्क फोर्स क्या होती है, पार्टिसिपेशन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, एनरोलमेंट रेशियो आ जाएगा वो क्या होता है। तो एक एक करके टर्म्स करेंगे तो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने पढ़ा है वर्कर, वर्कर कौन होता है, उसके आगे लेबर फोर्स आएगा। पहले इतना साथ साथ रीड करते रहेंगे ताकि कोई डाउट है तो हम उसको साथ के साथ ही क्लोज करें।